So in this lecture, we will discuss about the alkenes. So you can say alkenes are unsaturated hydrocarbons that contain at least one carbon-carbon double bond. So alkenes are also called olefins. So olefin is Latin word which means oil forming. तो अल्कीन्स क्या चीज़ है? अल्कीन्स ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. ये क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कम से कम एटलीस्ट यानी कि वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. तो अल्कीन्स को हम ओलेफिन भी कहते हैं. ओलेफिन्स एक लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ऑयल फार्मिंग. तो the general molecular formula of you can say alkenes is CnH2n. So it's the general formula of alkene is CnH2n. So you can say the double bond in alkenes makes them more reactive than alkanes. अल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड होता है यानी कि ये जो अल्कीन्स है इसमें जो ये डबल बॉन्ड होता है ये उसको बहुत रिएक्टिव बनाते हैं. I can say due to the double bond the alkenes are more reactive as compared to alkane. So the functional groups for an alkene is the double bond. तो अल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसका डबल बॉन्ड होता है. यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये दिस फंक्शनल ग्रुप इन अल्कीन. The simplest alkene is ethene having molecular formula C2H4. So you can say that the simplest यानी जो simplest alkene है वो ethene है और उसका formula है C2H4. So this is you can say this is the ethene having a double bond. So this is C2H4. You can say the ethene and this one is ethene having a double bond. So first 5 alkenes with the electron cross and dot structure are shown below in the figure 12.2. So the first 5 alkenes are, I can say, this is the ethene, or I can say ethylene having formula C2H4, and this is a condensed formula CH2. So you can say this is the propene or propylene having formula C3H6. Or you can say the condensed formula is CH2 double bond CH3. And the third one is butene or butylene having molecular formula C4H8 or condensed formula CH2 CH2CH3. And this is pentene. I can say formula C5H10 and condensed formula CH2 CH2 all twice and CH3. So this is what we can say the hexene formula C6H12 or the condensed formula CH2 CH2 whole thrice and CH3. So this is the structure formula of the first 5 alkenes. You can say this is ethene. This is ethene from a double bond. This is the propene.
and this is the structure formula of propene, and this is butene. I can say this is a structure formula of propene having of 3 carbons. So you can say this has 3 carbons because therefore this is propene, and having one single bond, and this is also we can say this is butene, this is a propene having 3 carbons, and this one is the butene having 4 carbons. So we can say each has one double bond, and this is the ethene having 2 carbons with double bond between 2 carbons. Similarly, this is the pentene having 5 carbons and 5 carbons with one double bond. So we can say that this is the hexene having 6 carbons with the one double bond between 2 carbon atoms. So we can say each alkene has one double bond between 2 carbon atoms. So we can say this is the structural formula of the alkenes. So we can say this is the electron cross and dot formula of the first 5 alkenes. So this is the ethene. So having the cross and dot formula. So this is the 2 carbon atoms having 4 electrons for sharing. So we can say this is a double bond. This is a double bond between 2 carbon atoms. So double bond is formed by the sharing of 2 electrons from each carbon atom. So we can say that this can form a double bond. And you can say the next one is propene, and this is the double bond. You can say this is a double bond, and this is a single bond. So this is a butene having 4 carbon atoms, and this is the one double bond, and this is the single bond between carbon atoms. So similarly, you can say that pentene has 5 carbons having one double bonds and remaining single bond between carbon atoms. So you can say this is the double bond between 2 carbon atoms, and these are the single bonds. So you can say so this is single bond, this is a double bond, and this is the single bond, this is a single bond, this is a double bond. Or you can say that this is a single bond, this is single, 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 and it's a double bond. So we can say that this is a single, single, single bond, and this is the one double bond. So this is the hexene. So next one is rules for naming alkenes. The IUPAC rules for alkenes are similar in many respects to those for following alkanes. So first one is select the longest continuous chains that contain the double bond is the parent chain. तो ये बताते हैं कि फर्स्ट यानी सेलेक्ट करें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज होते हैं उसको आप सेलेक्ट करें जिसमें यानी कि डबल बॉन्ड होता है. तो यानी जिस एक कार्बन का जो चेन होता है उसमें वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो. और सेकंड इज कैन से द पेरेंट नेम इज डिराइव्ड from the name of the identical alkanes in which the last one of alkane is replaced by ene. So तो ये बता रहे कि जो पेरेंट नेम होता है उनको आइडेंटिकल अल्केन से हम मालूम करते हैं. इसमें जो लास्ट होता है ना एन यानी अल्केन का जो एन होता है लास्ट में ए एन ई, तो ये जो एन है इसको हम रिप्लेस करते हैं ई एन ई, यानी अल्केन का जो एन ई होता है उसको हम ई एन ई से रिप्लेस करते हैं. जैसे कि ये हमारे पास अल्केन में ए एन है तो इसको हम ई एन ई से रिप्लेस करते हैं.
तो अल्केन में ये होते हैं अल्कीन ये. तो next one is number 3. Number the chain so as to include both carbon atoms of the double bond. Numbering begins from the end which is near to the double bond. यानी कार्बन चेन में जब आप नंबरिंग करते हैं तो जिस कार्बन के करीब या जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ते हैं वहां से नंबरिंग शुरू करनी पड़ती है. यानी कि यहाँ पे अब ये जो कार्बन है ये चूंकि इसके डबल बॉन्ड करीब है तो हमने नंबरिंग को यहाँ से स्टार्ट करनी है. यानी 1 2 3 एंड 4. यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 के से दूर पड़ता है. तो कार्बन नंबर 1 के करीब है डबल बॉन्ड तो हमने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करनी है. Number 4 is the position of the double bond is shown by numbering the alkenes so that minimum number is assigned to the double bond. जो डबल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन को हम नंबरिंग के जरिए सर्किल में शो करते हैं ताकि मिनिमम नंबर कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को मिल जाए. So next one is the designate the location of the double bond by using the number of the first atom of the double bond as a prefix. So next one is indicate the location of the branches substituent by number of the carbon atoms to which they are attached. तो ब्रांचेस जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं उसमें कार्बन चेन में उसको इंडिकेट करने के लिए जो यानी कि ब्रांचेस की जो लोकेशन है उसको इंडिकेट करने के लिए उस नंबर उसको लगाए जाते हैं. इन नंबर्स के ज़रिए से जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं कार्बन के साथ कार्बन चेन में उसको हम नंबर के ज़रिए से इंडिकेट करते हैं. यानी जिस कार्बन एटम के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो वही नंबर उनको इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट को. So since the best will be same as the next question is, so this is the 18. You can say this is the carbon 1 and 2. And here it is shown that this is the propene. You can say it says a double bond of this. You can say this double bond and this is a single bond. So we will start numbering from here because the double bond is near to carbon number 1 and it is farthest from the carbon number 3. So double numbering will be start from right to left. Similarly, in case of butene, you can say 1 butene. The numbering will be start from this carbon number 1 because the double bond is near to this carbon. So you can say numbering will be start from right to left. So similarly, in case of we can say 2 butene, this is the chain of 4 carbon atoms. So you can say and I can say this is 2 butenes, so having double bond here. So it's a double bond on the 2 carbons. So you can say this is a 2 butene. So next one is you can say this is the chain of 1, 2, 3, and 4.
So we can say the two methyl groups. So one is attached at carbon number 2 position, and the second is attached at carbon number 3 positions. So the chain is of 4 carbon atoms. So we can say 1, 2, 3, and 4. So we can say that this is the 2,3 dimethyl 2-butene, because the double bond is on the carbon number 2. So position, so this is the 2,3 dimethyl butene. Similarly, in case of this structure, we can say that the double bond is between the 2 carbon atoms. So we can say that it has 6 carbon atoms. So we can say that the double bond is this double bond is present between 2 carbons. So we can say between the centers of the 6 carbon atoms. So, but we will start numbering from that side with a more number of substituents. So we can say that this is the carbon number 1, this is the carbon number 2, and this is the carbon number 3. So we can say, and that if we start from the left to right, we can say that this side has more branches, so we can say more alkyl groups. So this is the chain of 6 carbon atoms. यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा तादाद में लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है एक ये लगा हुआ है और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, and the second methyl group is on the carbon number 3. So you can say this the 3 carbons from, if you start from left, have 2 methyl groups, and so these 3 carbons, you can say this 3 carbons has the 2 methyl groups attached to, while these 3 carbons have only 1 methyl groups attached to. So we can say we will start from the left to right due to more number of substituents attached to. So this will be the, you can say the 2, 3, 4, because methyl groups are attached at position number, this is attached at position number 2, and this is position number 3, this methyl group is position number 3, and this methyl group is attached at position number 4. So 2, 3, 4 is a trimethyl because they are 3 methyl, and 3 hexene. 3 hexene means that the double bond is located on the carbon number 3. So you can say this is a double bond located so here. So you can say this is 3 hexene. So the structure, the name of the structure will be 2, 3, 4 trimethyl 3 hexene. Now let's come towards properties of alkenes. So you can say alkene is an unsaturated hydrocarbon, so it can be prepared from saturated organic compounds by elimination reactions. तो alkenes जो है ये unsaturated compounds है और इनको हम ना alkanes से prepare करते हैं elimination reactions के जरिए से. तो elimination reactions के जरिए से हम इनको करते हैं. So you can say, so this is the preparation of alkene. So by elimination reactions हम इसको यानी कि elimination reactions के जरिए से हम alkenes को तैयार करेंगे alkane से. तो elimination reactions क्या होते हैं? ये elimination reactions है. In elimination reactions, atoms are removed from a molecule against adjacent carbons to form a double
triple bond. This type of reaction is the opposite of addition reaction. यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में हम एटम्स को रिमूव करते मॉलिक्यूल से तो ताकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। यानी जब हम एटम्स को रिमूव करेंगे किसी मॉलिक्यूल से, यानी जो मॉलिक्यूल्स का एडजेसेंट कार्बन होता है, तो उसके नतीजे में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन का अपोजिट है। यानी एडिशन रिएक्शन में हम उसको ऐड करते हैं इन preparation of alkenes, a group of atoms are removed from two adjacent carbon atoms of the saturated organic compounds to produce the double bond. यानी हम adjacent कार्बन से एटम्स को रिमूव करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है। और इसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। So dehydration of alcohol means removal of water from alcohol. Dehydration का मतलब ये है कि removal of water, यानी अल्कोहल से अगर हम वाटर को रिमूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे dehydration of alcohols। या किसी भी चीज़ से हम वाटर को अगर हम रिमूव करना चाहे तो ये क्या होता है डिहाइड्रेट। अगर हम इंसानी बॉडी से भी पानी का यानी लॉस हो in the form of sweating, so we can say this is dehydration. It is the process in which alcohol lose water and form a double bond. For example, ethene is prepared from dehydrating of ethyl alcohol or ethanol. You can say. So ethene is prepared from ethanol by the dehydration of ethanol. So you can say this is the ethanol. You can say. And this is the ethanol. So we will remove the water molecules for this one. So we can say one OH group and one hydrogen atom. So and this will combine to form water. So we can say in this case. So when this is removed, then this will be converted into double bond. So you can say the double bond will be, you can say this is like this. So the double bond will be formed here. This is so this. So here you can say this is removed, and here, and we can say the this one remaining. This side two hydrogen, and this side hydrogen. So this will be double bond. So we have removed water molecule from adjacent carbon atoms, and the alkanes, you can say the single bond is converted into double bond. So this single bond is converted into, you can say, this double bond. So this is a double bond, and this is ethene and water. So this is the removal of water molecule from alcohol to form double bond. Now next one is, you can say, dehydrogenation of alkyl halide. Dehydrogenation of alkyl halide means removal of hydrogen and halogens. This is dehydrohalogenations. Dehydrohalogenations. So you can say removal of two things. One is हाइड्रोजन एंड द अदर इज हैलोजन। तो यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को अगर हम रिमूव करेंगे तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो दिस आर द हैलाइड्स, यू कैन से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल ethene is prepared from dehydrohalogenation of ethyl chloride, chloroethane. So you can say, so this is the ethyl chloride. So from this we will remove hydrogen and chlorine.
So this is the hydrogen and this is the chlorine, and we're going to remove both hydrogen and chloride. So if we by removing this H and Cl, here we will get HCl, and the remains will be that of you can say this is the ethene. So this single bond will be converted into this double bond, and this will be removed like this, and you can say that this single bond will be converted into this double bond. So this is the we can say the dehydrohalogenation of ethyl chloride into ethene. So and hydrochloric acid is formed. So hydrochloric acid reacts with potassium hydroxide to produce potassium chloride and water. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। जैसे कि हमारे पास ये HCl है, ये KOH के साथ रिएक्शन करके KCl और H2O बनता है। सो वी कैन से दैट physical properties of alkenes. The first three members of alkenes, we can say ethenes, propene, butenes are gases, and others are liquids, and higher are solids. पहले जो थ्री जो ना जो एल्कीन्स की जो कंपाउंड्स है जैसे कि तीन है प्रोपेन ब्यूटीन कैन से these are gases तो इसके बाद जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और जो हायर होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सो वी कैन से अल्कीन्स आर नॉन पोलर, अल्कीन्स नॉन पोलर होते हैं, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर चूंकि पोलर है और अल्कीन्स नॉन पोलर है तो इस वजह से अल्कीन्स जो है ना पानी में हल नहीं होते, सो दे आर इनसॉल्युबल। लेकिन अल्कीन जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स है उसमें सॉल्युबल है, जैसे बेंजीन है, एसीटोन है, इस तरह की चीज़ें जो पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें सॉल्युबल है। तो सिमिलरली यू कैन से दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट and density gradually increases with an increase in molecular mass. तो अल्कीन्स का जब हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लिहाजा with increase of molecular mass, the boiling point, melting point and density we can say increases. Now next is the important reactions of alkenes, chemical properties. We can say alkenes are unsaturated hydrocarbons. Due to the unsaturated nature of alkenes, so they easily undergo addition reactions, and in this way they are converted into saturated compounds. So we can say तो अल्कीन जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो यानी ये जो अनसेचुरेटेड नेचर है अल्कीन्स का, इस खूबी की वजह से अल्कीन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं और इस एडिशन रिएक्शन के नतीजे में उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी पहले हमने पढ़ा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन्स को रिमूव कर रहे थे या हेलाइड को रिमूव कर रहे थे, तो इसमें जो है ना ये है कि बता रहे कि ये जो एडिशन रिएक्शन है, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो वो इसके नतीजे में अल्कीन्स अल्काइंस में कन्वर्ट हो जाते, अल्कीन्स अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू कैन से बिकॉज alkenes are saturated and alkenes are unsaturated compounds. So addition reactions is the characteristic properties of alkenes. So addition reaction है वो प्रॉपर्टीज है अल्कीन्स की, क्योंकि अल्कीन्स में हम एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं जबकि अल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं।
जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. So we can say addition of halogens. Addition of halogens. This is, you can say, addition of halogens means addition of fluorine, chlorine, bromine, etc. to alkenes. यानी अगर हम जो हेलोजेंस फैमिली है जिसमें फ्लोरीन शामिल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर हम अल्कीन्स में उसको ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस. आई कैन से एडिशन ऑफ अल्कीन्स. सो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल when bromine is added to ethene in the presence of an inert solvent like carbon tetrachloride, the double bond of it is converted into single bond. तो अगर हम एडिशन रिएक्शन में अगर हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे, इथीन में हम ऐड करेंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो कैन से दिस वन, सो जो डबल बॉन्ड होगा उसको कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. तो यानी यहाँ पर नीचे दिखाया गया है जैसे कि ये हमारे पास हो इथीन है, एल्कीन, सो हैविंग डबल बॉन्ड, सो दिस इज द ब्रोमीन. So we can say addition of bromine to alkenes. So the डबल बॉन्ड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा. तो जो दो ब्रोमीन्स है ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. यानी कि ये जो ब्रोमीन है एक यहाँ पे लग जाएगा इस कार्बन के साथ और एक ब्रोमीन है ये इस कार्बन के साथ लग जाएगा. और नतीजे में जिस तरह ये लगा हुआ है, ये वाला है, ये वाला है, तो ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि ये हमारे पास है तो ये हमारे पास जो है ये सिंगल बॉन्ड बन गया. तो अब ये जो 1,2 डाइब्रोमोइथेन, 1,2 dibromoethane, because the two bromines are on the position 1 and 2 carbon atoms, so we can say that these are 1,2 dibromoethane. It's ethane because 2 carbons and single bonds, so it's ethane. So now this is given a test for unsaturations. So let's we will see that how to test the unsaturated compounds. So this is given that add bromine in carbon tetrachloride. So red color alkenes. The color quickly disappears as the bromine is added to alkenes. If there is no double bond present, the reddish brown color will remain. You can say this will be alkane. Or if the decolorizations the decolorizing bromines is the chemical traced for the presence of double bond alkenes. तो ये कह रहे कि अगर हम ब्रोमीन को हम ऐड करेंगे अल्कीन में तो कलर जो है ना क्विकली डिसअपियर हो जाएगा. जब हम ब्रोमीन को अल्कीन में ऐड करेंगे तो अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड नहीं है यानी अल्कीन अगर वो नहीं है तो जो रेडिश ब्राउन है वो एग्जिस्ट होगा, विल रिमेन. सो दिस इज यू कैन से इफ यानी ये अगर एग्जिस्ट करे, परसिस्ट करे, कैन से इफ द कलर okay, so the brown color persists. So this one, it means that this is alkene. If the color disappears, such as this, we can say that this is the alkene. तो ये उसका टेस्ट है. यानी हम हमारे पास alkene इसके इसमें अगर हम ब्रोमीन को ऐड करें, इसमें भी ऐड करें, तो अगर ये हम ऐड कर रहे ब्रोमीन को हम ऐड कर रहे हैं Br2. सो अगर ये कलर तो ये क्या है, अल्केन्स है. और अगर कलर
ये अल्केन्स हो गया। अगर कलर डिसअपियर हो जाए तो ये दिस इज दी कैन से दिस इज अल्केन्स। सो the next one is addition of hydrogen halides. So addition of hydrogen halides, in this case is you can say this is the hydrogen bromide or hydrogen chloride. You can say the hydrogen halide means H into H bond X. So the X may be chlorine, bromine, iodine, any of the halogen family. So in this case, you can say this is the bromine. This is H. You can write in this way HBr. So this is the HX and X is in this case is bromine. So addition of hydrogen halide means addition of hydrogen and halogens. यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब ये होता है कि हम हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों को ऐड कर रहे हैं। यानी जैसे या हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl हम ऐड कर रहे हैं, HBr हम ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज द एडिशन ऑफ hydrogen and halogens both. Hydrogen bromide, you can say that hydrogen iodide, so these are the halides. The order of reactivity of alkenes with the hydrogen halide is, I can say that HI is more reactive than HBr and HBr is more reactive than HCl. यानी H हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू HCl। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ये दिया गया है। तो हम इथीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो H यू कैन से तो एक H इधर पे लग जाएगा और Br यू कैन से जो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। सो यू कैन से रिजल्ट विल बी so the structure will be just like this. So you can say this is the addition of hydrogen halide. So here are two hydrogen attached. So it will be ये अपनी जगह पे हाइड्रोजन रहेंगे लेकिन जब ये डबल बॉन्ड खत्म होगा तो उसके नतीजे में यहाँ पर ब्रोमीन जो अटैच हो जाएगा और इसी तरह ये जो दो हाइड्रोजन है ये भी अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे लेकिन जो ये वाला हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो ये जो HBr यहाँ पे अटैच हो गया लेकिन ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ alkene into saturated compounds or alkanes. So you can say this is the addition of hydrogenations. So what is hydrogenation? You can say when hydrogen is added to ethene, the double bond is converted into a single bond and produces the ethane. तो हाइड्रोजनेशंस यानी कि हम इथीन में अगर हाइड्रोजन को ऐड करें तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इसके नतीजे में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ alkene. The addition of hydrogen to alkenes readily occurs in the presence of nickel, the catalyst, at 250 to 3 degrees Celsius, forming corresponding alkanes. Hydrogenation is you can say it's an exothermic process
तो यहाँ पर ये हमारे पास इथीन है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर 250 से 300 है, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस इथेन। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये ख़त्म हो गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये दो हाइड्रोजन थे, ये पहले यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो जब ये दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन ये बन गए, ये तीन हाइड्रोजन आ गए। इसी तरह यहाँ पर भी तीन हाइड्रोजन ये आ गए, तो ये और ये जो है इस यानी इथेन में कन्वर्ट हो गया। Hydrogenation of unsaturated organic compounds is industrially used for the conversion of vegetable oils into ghee. तो हाइड्रोजनेशन ये मतलब हम वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करने के लिए ये हाइड्रोजनेशन का अमल किया जाता है। Next one is oxidations with K-4. Alkenes react with acidified aqueous solution of potassium permanganate. So they decolorize its purple color and form ethylene glycol. You can say 1,2-ethane-diol, magnesium dioxide, manganese dioxide and potassium hydroxide. So ये यहाँ पर alkenes reacts पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, जो अल्कीन का रिएक्शन जैसे अल्कीन है इथीन है, तो इसको अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट के साथ मिला दें एसिड की मौजूदगी में, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, तो उसके नतीजे में इसके नतीजे में क्या बनेगा, तो यानी अब पोटाशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है जो वो डिसअपियर हो जाए, तो उसके बाद फिर ये बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो ये इथीन और पोटाशियम परमैंगनेट, और यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटाशियम डाइऑक्साइड भी बन जाते हैं। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ इथीन इनटू कैन से इथाइलिन ग्लाइकोल। सो टेस्ट फॉर unsaturations. The purple color of an acidified aqueous solution of potassium permanganate decolorizes when it is treated with alkenes. This test is used for the detection of alkenes and commonly called Bayer test. तो ये एक टेस्ट है जो पोटाशियम परमैंगनेट के साथ किया जाता है ताकि अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करें, और इस टेस्ट के नतीजे में जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ पर ये टेस्ट दिखाया गया है, ये अल्केन है, ये अल्कीन है। तो अब ये कहते टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, टेक 1 ml and hexane in one test tube and 1 ml of hexane in the other tube. Add 2-3-4 drops of acidic solutions of potassium permanganate. Each tube, place the stopper on the test tube and shake it. Record the initial observations color in both the test tubes. After 1 hour, the two test tubes containing N-hexane and N-hexenes are compared. Record the observations and interpret the result. तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो है ये क्या है, ये है अल्कीन, ये हो गया है अल्केन। तो ये कहते हैं कि देयर इज नो रिएक्शंस विद अल्केन एज देयर इज नो डिकलरेशंस अल्केन्स। तो अगर हमारे पास यानी कि अल्केन और अल्कीन दोनों मौजूद है और उसमें हम K-4 को ऐड करें, यानी हमारे पास ये क्या है अल्कीन है और ये हमारे पास अल्केन है, तो सैंपल हमारे पास इसकी हम पहचान कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पोटाशियम परमैंगनेट को यहाँ पर ऐड करना है, यानी KMnO4। तो K-4 को हम दोनों में ऐड करेंगे
अगर कलर जो है ना ये जिस तरह ये डीकलराइज हो गया ना कलर इसका, तो इसका मतलब है ये अल्कीन है। और अगर कलर डीकलराइज ना हो जाए यानी पर्पल ही रहे तो इसका मतलब है ये अल्केन है। सो दिस इज द taste of alkene and alkynes with the potassium permanganate. So the next one is, you can say, alkynes. But we will discuss the alkynes in next video.